Hello everyone, welcome back. So those students who are preparing for JRF, SRF, NET, SMS, STO and ARS in agronomy subject, a very good news for them. So basically we are starting this series to complete the fundamental of agronomy or introduction to agronomy part. From of course the key books, the key textbooks that we all refer to, none other than the Fundamental of Agronomy by S.R. Reddy and Reddy. So we will discuss each and every key points from these two books. So stay tuned and you will learn a lot of things from agronomy. Basically agronomy is a kind of father of all subject of agriculture. It's general representation, but the thing is that whenever you see any competitive exam, agri-competitive exam or any exam, entrance exam, or most of the agri-competitive exam, you will find a maximum number of questions from agronomy, because agronomy not only it comprises the crop production activity but also the concept or fundamental key principles behind everything like water management, weed management, resource management, tillage, soil management, everything. So we will cover all these aspects of agronomy, and stay tuned for this, and I hope you will enjoy all this series. So we will break all these chapters into smaller lecture videos, and we will try to conceptualize or try to elaborate the concepts in crisp manner. If you face any doubt, you can ask me freely over the comment section. So ये मैं दोनों लैंग्वेज में कवर करूँगा, हिंदी एंड इंग्लिश, सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इन बेटर वे, एंड इवन आई कैन ऑल्सो एक्सप्लेन इट इन बेटर वे, राइट. So principles of agronomy, first chapter, that is introduction. Let's discuss. So basically agriculture, it was derived from Latin word that is ager or agri means soil and cultura means cultivation. So agriculture किस word से derive हुआ था? That is Latin word. कभी कभी question पूछा जाता है कौन सी word से agriculture derive हुआ था, कौन सी word से agronomy derive हुआ था, कौन सी word से the climate was derived, कौन सी word से tillage derive हुआ था. So आपको याद रखना है, ठीक है. तो agriculture जो word है that was derived from Latin word, and from two Latin words, that is ager or agri means soil and cultura means cultivation. So what does agriculture stands for? It stands for all aspect of crop production, all the aspects of crop production, livestock farming, fisheries, forestry, etc. So agriculture not only comprises of crop production but also the livestock rearing or livestock farming, fisheries, forestry, all these things are coming under agriculture. So agriculture is not just a common subject. Okay, it is a way of life, way of living. For many farmers, this is a way of life. So let me tell you, more than 50% farmers that depends on agriculture in our India. So yeah. Next thing is agronomy. So our main chapter is agronomy, and agronomy is a core subject of agriculture. If you know, then this agronomy term ये कहाँ से कौन सी word से derive हुआ था? That was derived from Greek word. Okay, Greek word agros and nomos. So agros का meaning हो गया field and nomos का meaning हो गया to manage. So agronomy, again I am repeating, agronomy was derived from Greek word and agriculture was derived from Latin word. Okay. So easy कैसे रहेगा? Agriculture, that means al is there, so you can say this is Latin word. Okay. Agronomy, a Greek word. Okay. Agros means field and nomos means to manage. So what agronomy stands for? Agriculture stands for studying all these like aspects of crop production, livestock farming, fisheries, forestry, etc. But what agronomy stands for? Agronomy क्या कहता है? मतलब agronomy है क्या? So it is the principles and practices. This definition was given by Norman in 1980. So agronomy stands for the principles and practices of soil, water and crop management, and to manipulate the complex crop environment system with dual aim of gaining degree of understanding the process involved and improving the productivity. So यहाँ पे क्या होता है? agronomy क्या है? इसका definition नॉर्मन जो दिए थे कि हमको क्रॉप जब हम कल्टीवेट करते हैं तो क्रॉप को स्टडी करना है, सॉइल को स्टडी करना है, उसका इंटरैक्शन जो एनवायरनमेंट है, क्रॉप एंड सॉइल का जो एनवायरनमेंट है, जो क्रॉप का एनवायरनमेंट है, उसके साथ क्रॉप का रिलेशनशिप क्या है, उस
प्रोसेस को भी स्टडी करना है। सो यहाँ पे हम सिर्फ क्रॉप लगा के उसको छोड़ नहीं दे रहे, उसको स्टडी करते हैं, उसको कौन सी फैक्टर अफेक्ट करता है उसको अच्छे से स्टडी करते हैं एंड उसको हम मैनिपुलेट करते हैं ताकि हमारा जो रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं वो एफिशिएंटली यूज हो एंड जो भी हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं दैट शुड बी मैक्सिमाइज्ड। ओके, सो दैट इज द मेन गोल ऑफ एग्रोनॉमी। नाउ जब हम बात कर रहे थे क्रॉप एंड इट्स एनवायरनमेंट, सो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। सो very complex crop environment system is there. So basically crop environment is of two type. One is aerial environment that you can see above the ground, and soil environment. So if there is crop, so this is the crop, this is the root system and this is the soil and this is the canopy. So this portion is called aerial environment or phylosphere इसको बोला जाता है, and root environment that is called rhizosphere or rhizospheric environment. So aerial environment consists of solar radiation, rainfall, temperature. Aerial environment is affected by solar radiation, rainfall, temperature, relative humidity, wind velocity, etc. And it cannot be easily altered. So aerial environment आप easily alter नहीं कर सकते हो। Large scale की बात हम कर रहे हैं, लेकिन green house condition में तो हम alter कर सकते हैं, लेकिन that is in small case, right? Small scale. But in large scale that is uneconomical to alter the aerial environment. That is uneconomical. Whereas soil environment, that is the below ground part or the rhizospheric environment, that can easily be altered with different management practices. So what are the soil environment? This consists of soil physical properties, chemical properties as well as biological properties. So soil physical properties में क्या क्या आ जाता है? Soil texture, structure, bulk density, soil penetrance, etc. So that is coming under soil physical property. देन सॉइल केमिकल पैरामीटर और सॉइल केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें आ जाता है पीएच, ईसी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बेस सैचुरेशन बीएस, ऑर्गेनिक कार्बन, देन न्यूट्रिएंट डायनामिक्स एक्सेट्रा. दीज आर कमिंग अंडर केमिकल प्रॉपर्टीज. एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में आपका आ जाता है माइक्रो एंड मैक्रोफोना एंड फ्लोरा. सो लाइक बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, अर्थवर्म, everything is coming under biological property, enzyme activity, everything. So all these consist of soil environment, and soil environment we can easily modify it or change because we can manipulate the soil, we can till the soil, we can cultivate the soil. Okay, we can add some amendment or organic matter to the soil. So in that way we can manipulate the soil or rhizospheric environment. But phylospheric environment, it cannot be manipulated that economically. सो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो कैसे डेवलप हुआ था, लेट्स डिस्कस ऑन दैट. ओके, सो जब अर्लियर ह्यूमन बीइंग जब इवॉल्व हुए थे ना, तब क्या हुआ, अर्लीस्ट मैन जो है उसका नाम बोला जाता है होमो इरेक्टस. ओके, सो अर्लियर जो मैन डेवलप हुए थे वो मोस्टली ट्रॉपिकल रीजन में डेवलप हुए थे एंड टुवर्ड्स टेम्परेट रीजन ये माइग्रेट हुए थे. ट्रॉपिकल मीन्स जो इक्वेटोरियल लाइन है उसके नियर बाई ये +5 डिग्री एंड -5 डिग्री, दैट मीन्स नॉर्थ 5 डिग्री एंड साउथ 5 डिग्री. सो इसी बीच में वो डेवलप हुए थे. मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग वाज इवॉल्व, देन दे माइग्रेटेड टुवर्ड्स टेम्परेट रीजन. ओके, सो ये कब हुआ था, ये 1.5 मिलियन ईयर्स एगो हुआ था. उसके बाद होमो इरेक्टस से डेवलप हुआ थे थोड़ा सा एडवांस वर्जन, दैट इज होमो सैपियंस. दे डेवलप ड्यूरिंग 250,000 years ago, 250,000 years ago. So Homo sapiens means they are having learning habit. Okay, so Homo sapiens धीरे धीरे लर्न करना सीखे, मतलब सीखना चालू किए, कुछ नॉलेज गेन करना चालू किए एनवायरनमेंट से. ओके, देन होमो सापियंस से फिर मॉडर्न मैन इवॉल्व हुए थे, जो कि होमो सापियंस जिनको बोला जाता है, वो हुआ नियर अबाउट 35,000 years BC. ओके, 35,000 years BC. नाउ पहले क्या हुआ था, जब पहले इंसान को सरवाइव करने के लिए फूड चाहिए होता है. सो फूड कहाँ से पहले आता था, फूड पहले जब नियर अबाउट 10,000 BC तब लोग हंटिंग करके फूड कलेक्ट करते थे, हंटिंग करते थे, आई मीन वाइल्ड एनिमल हो उसको हंटिंग करते थे. देन गैदरिंग करते थे, लाइक फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, जो भी जंगल में पाया जाता था उसको गैदर करते थे. दैट मीन्स hunting and gathering was the way of life at that time. That means near about we are talking about 10,000 BC. Then जो कि आप हंटिंग गैदरिंग करने से कितना लोगों को सपोर्ट कर सकते हो, जो कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में आप हंटिंग एंड गैदरिंग करने से उस टाइम 1 पर्सन को सपोर्ट कर सकते थे फॉर फूड. ओके, ना उसके बाद आ गया पास्चुरल लाइफ. दैट मीन्स एक जगह से आप दूसरे जगह जाओगे और मूव करते हुए आप कलेक्ट करोगे.
तब आप मतलब उस टाइम 3 नियर अबाउट 2-3 persons you could feed. Okay, then agriculture came. Agriculture evolved around 7500 to 6500 BC. Okay, so at that time agriculture evolved, and due to agriculture one person could feed more than 100 persons from 1 square kilometer area. So this is how evolution happened, agricultural evolution happened. Okay, so जब हम 7500 से 6500 BC की बात करते हैं, तब फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल वाज सीप एंड गोट. फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल अगर हम बात करेंगे हिस्ट्री में, तो सीप एंड गोट है जो कि जिसको फर्स्ट डोमेस्टिकेट किया गया था. देन अगर फर्स्ट कल्टिवेटेड क्रॉप की बात किया जाए, तब व्हीट एंड बार्ली, जो कि जब हमारा कल्टिवेशन स्टार्ट हुआ 7500 से 6500 BC, तब व्हीट एंड बार्ली को पहले कल्टिवेट किया गया था. देन अगर हम टाइम लाइन की बात करें, देन 4400 BC में मेज कल्टिवेशन स्टार्ट हुआ. देन पोटैटो 3500 BC में स्टार्ट हुआ. देन प्लाउ एंड इरिगेटेड फार्मिंग इट वाज इवॉल्व्ड इन 2900 BC. देन चिकपी कॉटन ये कल्टिवेशन स्टार्ट हुआ था 2300 BC में. देन राइस कल्टिवेशन स्टार्ट हुआ था 2200 BC एंड फिंगर मिलेट कल्टिवेशन स्टार्ट हुआ था अराउंड 1800 BC. सो लाइकवाइज बहुत सारे मॉडर्न क्रॉप जैसे कॉटन हो गया या फिर सनफ्लावर हो गया, वो सारे मॉडर्न क्रॉप इंट्रोड्यूस हुए थे. ओके, सो मेनली अगर हम कॉटन की बात करें या फिर सनफ्लावर की बात करें, दे वर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. ओके, मे बी ड्यू टू लाइक different ruins, like different rains, they evaded India. So during their evasion, so they started cultivating some new crops like like your sunflower, then soybean they introduced. Okay, then tobacco. देन इंडियन एग्रीकल्चर, अगर हम पहले एग्रीकल्चर की बात करेंगे, सो इंडियन एग्रीकल्चर वाज प्राइमरीली सब्सिस्टेंस टाइप. सब्सिस्टेंस टाइप का मतलब क्या समझना पड़ेगा. सब्सिस्टेंस टाइप का मतलब है डायरेक्ट हम फार्म से माउथ तक लेते हैं, मतलब खुद का कंजम्पशन के लिए जो एनफ होता है दैट इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस. मतलब खुद का खाने के लिए अगर एनफ होता है दैट इज सब्सिस्टेंस. ओके, बट as commercialization started, now it has shifted from subsistence farming to sustainable farming, as well as from food to mouth to food to farm to mouth to farm to export. Okay, so subsistence farming gradually it replaced with exchanged economy or commercialization of agriculture. Okay, now Portuguese they during 16th century AD they introduced some commercial crops to India like potato, sweet potato, tomato, chili, groundnut, cashew nut, tobacco and American cotton. These were introduced by Portuguese. Okay, now some scientific development happened gradually which gave us a like clarity or concept of some advanced technology. That means not advanced technology but different scientists they postulated something. So there is a timeline, you have to remember this one. Okay, sometimes in कभी एग्जाम में पूछा जाता है. लाइक वन हेलमंड जो थे वो एक कॉन्सेप्ट दिए थे कि प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन इज वाटर. सो वो कुछ एक्सपेरिमेंट किए जहाँ पे आप वाटर लेके ट्रीटमेंट लेके प्रोड्यूस किए, तो फिर वो अच्छा रिजल्ट आया. ऑब्वियसली अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन उस टाइम वो ऑब्जर्व किए कि जहाँ पे वाटर हम डाल रहे हैं वहाँ पे अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो वो प्रपोज कर दिए कि प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन इज वाटर. देन जेथ्रो टूल वो क्या किए, एक जगह टिलेज किए एक जगह नो टिल किए. जहाँ पे टिलेज किए वहाँ पे प्रोड्यूस अच्छा आया, तो वो प्रपोज कर दिए कि अगर फाइनर होगा सॉइल तो फिर अच्छा प्रोडक्शन होगा. एंड ही प्रपोज दिस कंसेप्ट इन हॉर्स होइंग हस्बेंड्री हिज बुक, एंड ही ऑल्सो डेवलप्ड सीड ड्रिल एंड हॉर्स ड्रम कल्टिवेटर. Then Arthur Young, from his experiment, he did permaculture experiment, and he collected different concepts and found different concepts and put it in his book Annals of Agriculture, which was of 46 volume. Okay. Then Humphrey Davy from in his book Elements of Agricultural Chemistry, and he published this book 1813. Then Lewis and Gilbert established Rothamsted Experimental Station. It is very important, like it is one of the important question. Rothamsted Experimental Station, it was developed by Lewis and Gilbert in England during 1834. Then J.V. Liebig, Justus von Liebig, he is the pioneer of law of restitution and law of minimum. Then Lewis patented production of SSP, that is single superphosphate
from rock phosphate by adding H2SO4 or sulfuric acid during 1842. Then Mendel, you know, the father of genetics, he proposed the law of heredity and causes of mutation, okay, during 1866. Then Robert Ransom patented cast iron share during 1785 and self-sharpening share during 1803. Paul Muller first synthesized DDT during 1874. So these are some of the scientific advancement during the early phase of agriculture development. From introduction part we just learned ki agronomy, what is agronomy. So our main aim of agronomy, what we discussed, ki there are some phylospheric environment factor is there and some rhizospheric environment factor is there. So our main goal is to support the plant or to modify the environment of the crop in such a way so that we can optimize the resource allocation and we can, मतलब हम रिसोर्स जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको ऑप्टिमली यूज़ करके हम कैसे मैक्सिमम प्रोडक्शन पा सकते हैं. दैट इज़ द मेन गोल ऑफ एग्रोनॉमी. सो ऑल एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट अप्रोचेस provide suitable environment to crop for increasing growth and yield. So that is our main concept of agronomy. Okay, so in this lecture, I mean this is the first lecture of introduction to agronomy. We will study later on different aspects of agronomy, and in this first lecture we just knew how agriculture evolved earlier and what is agronomy. So अगर आपका कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस चैप्टर या फिर एनी अदर चैप्टर, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड स्टे ट्यून फॉर रेगुलर लेक्चर्स. एंड अगर आप नए हो देन यू कैन जॉइन ऑल्सो माई टेलीग्राम चैनल दैट इज एग्रीकल्चर Q1A, वेयर यू विल गेट some updates of different competitive exam and some test series we are launching during the time being. Like you can also appear that self-assessment test or test series and you can enhance your preparation. Okay, so see you in the next lecture. Till then, have a great day. Bye bye.